is because that people don't disagree, right? You get for XYZ reasons. So you can appoint someone become a devil's advocate. What he's supposed to do is this person has a role now. This person is specifically assigned to disagree with the points, to bring alternative points. You have to bring pros and cons. It doesn't matter कि ये points से agree करता है. It doesn't matter the person believes in the opposite argument. ठीक है ना? बस इसका ये फर्ज है कि ये दूसरे ऑल्टरनेटिव जनरेट करके सामने लाए. क्योंकि इसको तुम लोगों ने स्पेसिफिकली असाइन किया है, तो पीपल वोंट टेक इट पर्सनली. देखो ये हमेशा कीड़े निकालता है, इसका काम है कीड़े निकालना, राइट? सो बिकॉज तुम लोगों ने खुद इसको चूज किया होगा, कोई बुरा नहीं मानेगा कि ये दूसरा आर्ग्यूमेंट क्यों ला रहा है. दूसरी चीज ये, क्योंकि इसका काम बन गया दूसरा आर्ग्यूमेंट लाना, तो होगा क्या कि he will be able to present more openly दूसरे arguments, right? ये फर्क नहीं पड़ता कि जो बंदा दूसरा arguments लाता है वो दूसरे arguments के ऊपर believe करता है कि नहीं करता. It doesn't matter. All he's supposed to do is bring different arguments, and that's his job. So specifically assigning people to bring different arguments, that's devil's advocate. So these are some ways that you can use to avoid groupthink occurs into a group. Okay, that's the question exam. All right. Next question. Next question. Okay. So discuss the application of these strategies in everyday life in organizations. The group members. The group members appoint devil's advocate. All right. अच्छा. So basically अब हमने जो techniques discuss की हैं, right? इनकी application को बात करते हैं. Are they applicable? Are they not applicable? Number one, they may be applicable in some cultures, as I told you. Collectivist culture के अंदर people like to remain close, right? They like to make relationship priority. Individual cultures के अंदर नहीं काम करता. So individual cultures के अंदर शायद these techniques would come in handy collectivist culture के अंदर, क्योंकि group pressure ज़्यादा strong होता है, ये चीज़ें काम नहीं करेंगे. So it might be culture bias in that regard. Number two, one other application that you can think of is number one, कि you're not sure, ठीक है ना, या you're not sure which strategies to apply. क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा हो कि strategies आपको apply करना है, but जैनिस ने ये नहीं पता है कि आप कौन सी strategy कब इस्तेमाल करनी होती है. So in that regard, ठीक है ना, because Janice has not made it clear कि आपको किस वक्त कौन सी strategy apply करनी होती है, that could be a disadvantage as well. ठीक है. Number three, होता क्या है कि some of these strategies, ठीक है ना, require क्या कहते हैं additional resources. For example, outside people. What if you don't have outside people? Some of these strategies require second chances. What if you don't have time? ठीक है ना. Some of these क्या कहते हैं strategies require you to have additional resources such as time and people. So without time, without people, ठीक है ना, some of these strategies will not be applicable. ठीक है ना, shortage of time की वजह से at least ये तो नहीं हो सकता. All right. Number three, ठीक है ना. Number three क्या एक और चीज़ है कि if you do apply, ठीक है ना, तो होगा क्या कि it's gonna be costly, क्योंकि like groupthink इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को नहीं आता ना disagree करना. So where groupthink exists, you need to train people. You need to make people learn these tricks so that they can get aware of it. So basically, you need training to be given to people, which is gonna be costly. So so again, that could be something that is क्या कहते हैं very very hard to execute, क्योंकि लोग पैसे बचाना चाहते हैं. So if something involves training, ठीक है ना, if something involves money, that could be difficult to execute in an organization, ठीक है ना. So it is applicable, लेकिन लोगों को शायद सिखाना पड़ेगा, so trainings may be required. So that's some क्या कहते हैं application regarding groupthink avoiding strategies. Now there's a study designers started to investigate whether illusion of unanimity occurs when groupthink occurs. All right, so this is interesting.
So your suppose designer is trying to find out whether, yeah, this one occurs now. Illusion of unanimity. Yeah, illusion of unanimity. If you want recall, is like this. People don't disagree because people believe that बहुत सारे लोग जो है ना already agree करते हैं, so I'm the only one that's gonna disagree. So many people assume that सब support कर रहे होंगे जब भी मैं disagree नहीं कर रहा हूँगा. So you want to investigate कि क्या ये अगर होता है कि नहीं होता. So the way you do this is basically, you do it in a company, obviously. So, all right. So basically, your IV is क्या कहते हैं? Groupthink present. ठीक है ना? Your IV level 2 is groupthink not present. ठीक है, जहाँ पे groupthink नहीं होता. एक group है जहाँ पे groupthink होगा, एक group है जहाँ पे groupthink नहीं होगा. ठीक है ना? So these are two different groups, two levels of IV. Your DV is going to be क्या कहते हैं? Illusion of unanimity. क्या कहते हैं? Level of illusion of unanimity. ठीक है ना? So you're gonna find that out. Setting, you're gonna do a field experiment. ठीक है ना? In a company, तो बताना पड़ेगा organization के बारे में. In a call center. ठीक है ना? Let's suppose. अच्छा. Sample. You're gonna have, let's suppose, 40 people. ठीक है ना? 20 male, female 20 male. ठीक है ना? क्या कहेंगे? You have 20 people, ठीक है ना, who come from the same department. As in 20 people are going to be of the sales department, ठीक है ना, and 20 people are gonna be comprised of different departments, ठीक है. All right. Sampling technique. You can use opportunities technique. You go to the nearest call center and ask their permission for the experiment. Ethics के वास्ते consent वगैरह की बात करें, consent, informed consent, right to withdraw, ठीक है ना, क्या कहते हैं, privacy and confidentiality. All right, so this is what you're gonna do. हमारा जो डिज़ाइन होगा, that's gonna be an independent maze design, ठीक है ना, जहाँ पे two separate groups होंगे. Group 1 is gonna comprise of people from the sales department, ठीक है ना. Group 2 is gonna comprise of 20 people from different departments. Makes sense, right? क्योंकि grouping हम करवा रहे हैं. The theory is कि जो लोग एक दूसरे को जानते होंगे वहाँ पे ज़्यादा chances है grouping होने के, and जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते वहाँ पे कम chance है grouping होने के लिए. Alright, so methodology is you're gonna make them solve a self-report mixed questionnaire, ठीक है ना, जहाँ पे open close and both है. Alright, so what you're gonna do is क्या कहते हैं, दोनों ग्रुप को ना तुम क्या बोलोगे, दोनों ग्रुप को एक प्रॉब्लम दोगी सॉल्व करने में, ठीक है ना. The problem is gonna be same for both group, ठीक है ना. They're gonna have the same time to solve the problem, ठीक है ना. So that is going to be a control. वो प्रॉब्लम क्या है जो to solve करना? Let's suppose you're going to give them a क्या कहेंगे, what you can you give them to solve? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? You can give them a problem to, मतलब you can give them a riddle to solve. You can give them a riddle to solve, right? And जिसके आखिर में कोई cash prize होगा if they can solve the riddle. ठीक है ना? All right. So that's the scenario. Again, you have to find out whether this occurs or not. ये वाला illusion of unanimity कहाँ गया? ये
people think that other people are in favor of majority. ठीक है. So तुम्हारा जो questionnaire पे question होगा ना, that's the main thing. Example questions. I believed uh, that most of the people in my group were the decision. Yes or no. ठीक है. If the person says yes, तो obviously उनको लगा कि majority ने decision को favor किया. That's why good thing हुआ. Were you were you in agreement? और देखो यहाँ पर riddles इट्स नॉट रिडल, बल्कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, जहाँ पे लोगों को डिस्कशन करना होगा. एनीथिंग दैट रिक्वायर्स डिस्कशन विल हैपन, जिसके बेस पे लोग आंसर डिस्कस करें. सो थ्योरी इज, देखा ग्रुप थिंक होना है. पीपल फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट नो ईच अदर वेरी वेल, राइट, दे नो ईच अदर वेरी वेल. सो इसका मतलब है कि यहाँ पे हार्मनी ज्यादा है. चांसेस है कि यहाँ पे ग्रुप थिंक होंगे. पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट दे डोंट नो ईच अदर, इसका मतलब है कि हार्मनी के चांसेस कम है. हो सकता है यहाँ पे ग्रुप थिंक कम होगा ना. वाई रिडल? क्योंकि नंबर वन इट इन्वॉल्व्स डिस्कशन फ्रॉम पीपल. नंबर टू, रिडल के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते हैं, राइट. तो चांसेस आर के कुछ लोग जो हैं आंसर के साथ डिसएग्री करेंगे, कुछ लोग आंसर के साथ एग्री करेंगे, राइट. बट व्हाट वी ट्राइंग टू गेट देम इज कि जो भी आंसर आता है, राइट, आई जो 20 सेल्स डिपार्टमेंट वाले लोग हैं जहाँ पे चांसेस ग्रुप थिंग ज्यादा है, we want them to agree on one answer, but we want to make sure कि जो आंसर वहाँ पे आया वो unanimity, illusion of unanimity की वजह से है. So that's why we gave a riddle, क्योंकि people discuss among them, generate different answers, ठीक है. But if we give them a math problem, right, तो obviously वो तो आंसर सबको पता चल जाएगा, 2 + 2 = 4, something like that. So that's an objective answer. तो उसमें आप डिबेट नहीं कर सकते. If something like a literal is subjective, ठीक है ना, जिसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं पॉसिबल, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि डिफरेंट आंसर्स लोग जनरेट कर सकेंगे. बट हो सकता है लोग फिर भी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव आंसर्स अपने सामने नहीं लाएंगे. सो देयर कैन रिमेन क्वाइट, चांसेस आर, बिकॉज ऑफ यूनानिमिटी के इल्यूजन की वजह से. सो दैट्स व्हाई वरना तुम कुछ भी ला सकते हो. For example, um, you can give them क्या कहते हैं, something to solve relating to their jobs. For example, you can ask them to solve a problem in their company which is related to cutting down the cost. So how can they save money in their company? For example, you can give them और क्या हो सकता है, you can give them to implement better strategies on how to boost up their sales, right? You can anything that involves them discussing the answers with each other and just give also other answers. That's what we want to do. Is that clear? I believe that most of people might go favor decision. Yes or no? Were you in Were you in agreement of the final decision? Yes and no. ठीक है ना? If you were in agreement, if were in agreement in what agreement or disagreement, explain why. This is an open-ended question, ठीक है ना. uh, would you feel as if there was pressure to not would you feel as if you might as if an alternative answer was more valid? Would you feel if rather than the one chosen by the group members? If yes, please explain why. This is an open-ended question. क्या तुम्हें लगता है कि जो alternative था वो ज़्यादा बेहतर था? अगर yes, तो please explain why.
सो जो डेटा आएगा ठीक है ना, दैट्स गोना बी क्वालिटेटिव, qualitative, quantitative both, ठीक है ना. डेटा एनालिसिस जो क्वांटिटेटिव डेटा का होगा, दैट्स गोइंग टू बी योर मीन, ठीक है. डेटा डेटा एनालिसिस, ठीक है ना. एक कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन ये हो गया. सो या दैट्स गोना बी योर आंसर, ठीक है ना, ग्रुप थिंक के हवाले से. इज दैट क्लियर? Alright. So this is a debate question. Groupthink has negative consequences, right? Groupthink is bad. Do you agree or disagree? Well, groupthink does have negative consequences. uh, if we can argue के yes it has negative consequences क्योंकि बहुत सारे लोग के alternative नहीं दिखाए जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना. We shut people down who might have better answers, लेकिन उसकी वजह से alternate generate नहीं कर सकते. That's why it's bad. Groupthink is also bad because sometimes जो leaders होते हैं they want चीज़ उसी तरीके से चलता रहे. People who want to progress and have new and better ways to apply might not get taken into consideration. तो तो like group के अंदर betterment भी नहीं आती, right? So what both negative points है. Number one कि आप alternative generate नहीं कर सकते. Number two, क्योंकि ऑर्डिनेट जनरेट नहीं होंगे तो ग्रुप जो है इफेक्टिवली प्रोडक्टिव नहीं होगी, क्योंकि आप उसी तौर तरीके से चल रहे होंगे, ठीक है ना. तो विच इज गोइंग टू लिमिट प्रोग्रेसिवनेस, ठीक है ना. Alright, so now look at नहीं यार, ग्रुप थिंक has some positive consequences as well. देखते हैं. Well, does it have positive consequences? Let's see. Well, weak groupthink sometimes, ठीक है ना, does have positive consequences because if you realize कि अगर लोग alternative generate नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि ग्रुप की हार्मनी मेंटेन रहेगी. So if the group is harmonious, ठीक है ना, इसका मतलब है ग्रुप cohesiveness है, unity वहाँ पे strong है. So होता क्या है कि if you want to increase harmony, if you want to increase cohesiveness, ठीक है ना, so उस वहाँ पे यूनिटी बढ़ाने के लिए ग्रुप थिंक का फिनोमेना होना पॉजिटिव है, ठीक है ना. इफ यू वांट टू अवॉइड क्रिएटिंग डिसयूनिटी, ऑलराइट, इन विच और कोई तरीके जिस वजह से ग्रुप थिंक पॉजिटिव हो सकते हैं. यस, फॉर एग्जांपल it could be applicable when you have people who actively जानबूझ के on purpose try to like create uh, क्या कहते हैं ऑब्स्टिकल्स, जानबूझ के तंग करते हैं ना ग्रुप वाले लोग को, ऐसे जानबूझ के डिस्कशन के अंदर तंग करते हैं कोई लोग. तो ग्रुप थिंक वहां काम आ सकता है, वहां जहाँ पे तुम उन लोगों को ओवरकम कर सकते हो जो बहुत जो जानबूझ के लोग तंग करते हैं ग्रुप मीटिंग के अंदर, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी अ पर्सन हु ट्राई टू सैबोटेज योर ग्रुप. वहां पे ग्रुप थिंक काम आ सकता है क्योंकि ऑब्वियसली आप ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हो. So it could come in handy when there's a group member who's trying to sabotage your group as well on purpose. ठीक है, तो वहां पे काम आ सकता है. So that is group think. Now we come on to cognitive limitations. All right, so cognitive limitations again. Sometimes in a group, right, you make decisions. That decision is based on thinking process. You know that. Now, sometimes thinking process के अंदर क्या होता है? You make a decision that is not correct. And the decisions that are not correct, ठीक है ना, there are many types of thinking processes that contribute to the incorrect decisions. These are called sins, ठीक है ना. अब तीन तरीके के आप error करते हो in your cognitive process, thinking process. There's an error of commission, there's an error of omission, there's an error of imprecision. Let's discuss what it is. Commission का क्या मतलब होता है? Commission का ये मतलब समझ लो कि basically you consider something that you should not have considered, ठीक है ना. You think about something additionally that you should not have thought about. So basically
जो तुम्हें चीज सोचनी नहीं चाहिए थी तुमने उसको सोच के बैठ गया, तो बेसिकली समथिंग एक्स्ट्रा तुमने सोचा, समथिंग एडिशनल तुमने सोचा, राइट? कमीशन का मतलब ये होता है। सो डिसीजन लेते वक्त आप कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा लेके सोच सकते हैं जो आपके डिसीजन प्रोसेस को खराब कर सकती है? दैट इज सेंस ऑफ ओमिशन। उसके चार टाइप्स हैं। sunk cost bias, we normally do it if you think about this। अगर ग्रुप मेंबर देखें, यार देखो वैसे ही टाइम लगा है, ठीक है ना, अब तो हम छोड़ नहीं सकते, ये वैसे ही इतने सारे पैसे लगे हैं, अब इसको यहाँ पे छोड़ेंगे पैसे बर्बाद जाएंगे, सो लेट्स स्टिक विद दिस। if you feel something that is not going to work, लेकिन if you stick with it because of the resources you already invested in it, that is sunk cost bias। It is normally seen when people stay in bad relationship। देखो वैसे ही बहुत टाइम गुजर गया है, ठीक है ना, अब बाहर निकलना फजूल नहीं है, इसी के अंदर चला लो। sunk cost bias, क्योंकि बहुत सारा टाइम लग चुका है, देखो इसी घर में बहुत सारे पैसे लगे हैं, राइट, अब इसी घर को बना लेते हैं, sunk cost bias, राइट। देखो मैंने इतने साल लाइक मेडिकल में गुजार लिए हैं, थोड़ा और साल, अब मुझे इसी के अंदर प्रोफेशन बनाना ही चाहिए। आई डोंट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन, सम कॉस्ट बायस। सो इफ यू थिंक अबाउट जितना रिसोर्सेज लग चुके हैं, एंड इफ यू डिसाइड टू स्टिक विद इट जस्ट बिकॉज कितने रिसोर्सेज ऑलरेडी जा चुके हैं, दैट इज सम कॉस्ट बायस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रीफ परसिवरेंस। ब्रीफ परसिवरेंस क्या है कि यहाँ पे group members, ठीक है ना, they believe in something, belief perseverance, right? So they have a belief and they're gonna make a decision based on that belief, right? इनको असल में डिसीजन लेना चाहता without considering that belief। For example, क्या हो सकता है? For example, uh, you believed that you know what, आज रोड क्लियर मिलेगा, मुझे मुझे आज जो रोड होगा, ठीक है ना, आज रोड क्लियर मिलेगा, ठीक है, you have that belief। You went and you're stuck in a traffic, ठीक है ना। So having an information, relying on a wrong information की तरीके से समझ लो, is belief perseverance, ठीक है ना। If a group makes a decision on the wrong information, ठीक है ना, that is belief perseverance। All right। Now extra evidentiary bias के अंदर आता है, हमने sunk cost bias कर लिया, हमने belief perseverance कर लिया, right? Now let's come on extra evidentiary bias। Extra evidentiary bias, यू नो इट्स अनकरेक्ट। बिलीफ परसिवरेंस के ना हमें पता नहीं होता गलत होता है जब तक, ठीक है ना, हमने ट्राई नहीं किया था, क्योंकि ऐसे बिलीव्स। एक्स्ट्रावेरिएंट बायस के अंदर देयर इज एविडेंस कि इट इज रॉन्ग, ठीक है ना, एंड देयर इज एविडेंस कि यू शुड नॉट टच इट, बट you still choose to use it as well। For example, what do I mean? There is some information, ठीक है ना, that you should not have considered, ठीक है ना, and there is some information that you should have considered, ठीक है। Now, let's suppose if you're making a dish, right, and someone says, okay, you know what, if you use this spice, that is going to ruin your dish. You have been told this many, many times, but you still use it, ठीक है ना, despite being told many, many times। If you still make a decision, making on, decide on, if you still make a decision, ठीक है ना, using things that you should not have used, वो extra evident bias आता है, extra, ठीक है ना, थिंग्स यू शुड नॉट हैव यूज, इग्नोर करना चाहता है, साइड में रखना चाहता है, बट यू स्टिल यूज एक्स्ट्रा थिंग इन डिसीजन मेकिंग, जिसके साथ गलत डिसीजन चला गया, दैट्स एक्स्ट्रा एविडेंटरी बायस, ठीक है ना, ठीक है ना। बिलीफ परसिवरेंस, ठीक है ना, इज अ बिलीफ, ठीक है ना, इज अ बिलीफ यहाँ पे, ठीक है ना, दैट द ग्रुप मेक्स डिसीजंस ऑन, ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं डाल रहा है, यहाँ पे सारा का सारा डिसीजन जो है बिलीफ के ऊपर डाल रहा है, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा एविडेंटरी बायस एंड बिलीफ परसिवरेंस के बीच में फर्क समझ में आ गया। बिलीफ परसिवरेंस के यू मेक अ डिसीजन ऑन इनकरेक्ट बिलीफ, एक्स्ट्रा एविडेंटरी बायस के अंदर यू डोंट मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन समथिंग, यू मेक अ डिसीजन समथिंग एडिशनल एज वेल। सो लेट्स थिंक अबाउट बिलीफ परसिवरेंस के अंदर आप कोई चीज ऐड नहीं करते, एक्स्ट्रा एविडेंटरी बायस के अंदर आप कोई चीज ऐड करके डिसीजन करते हो जो गलत हो जाता है। इज दैट क्लियर?
Hindsight. Hindsight bias. Hindsight bias के अंदर you make decisions, ठीक है ना, based on uh, information, ठीक है ना, that you think is correct, ठीक है ना, but it has been outdated, ठीक है. For example, previously, ठीक है ना, if you made a decision, ठीक है ना, लाजमी नहीं कि वही strategy काम करेगी, ठीक है ना. Previously ये strategy काम किया गया था, ठीक है ना, but अब शायद वो strategy काम नहीं करेगी. तो what you do is you overestimate the effectiveness of certain strategies to work, but if you utilize them, पता चलता है यार इतना ज़्यादा effective नहीं था. क्या मतलब? Simple thing. You know what ये चीज लीक कर रहा है, so let's fix it using a tape, क्योंकि उसके घर में भी टेप लगा के सही किया था, right? If you estimate the effectiveness of tape, overestimate it, and if you use the tape again and वो tape deliver नहीं करता, इसका मतलब है you use hindsight bias, ठीक है ना, कि you use the past information and you over analyze the effectiveness of it, पता चला कि अब ये इतना effective नहीं था, so that's hindsight bias, ठीक है ना. hindsight bias के अंदर, ठीक है ना, there is some previous experience involved. So again, sense of commission के अंदर, ठीक है ना, sunk cost bias, you look at तुम्हारा कितना नुकसान हुआ and that's why you stick with it. Belief perseverance, you make a decision on long belief. Extra evidentiary bias, you take additional things into consideration that you hindsight bias is not clear, ठीक है. hindsight bias के अंदर, ठीक ना, you have something, ठीक है ना, you have something that worked in the past, ठीक है ना, कोई ना कोई past experience है उस चीज के बारे में. For example, you know a guy, you know a tailor, ठीक है ना, who worked for you in the past, and because of his past work, you say कि ये बहुत अच्छा tailor है. So तुमने उसका कोई ना कोई accuracy को बताई होगी. But when you actually go to him, पता चलता है कि इतना ज़्यादा अच्छा काम इसने इस बार नहीं किया. So what you did was तुमने past knowledge को accuracy को तुमने ज़्यादा overestimate कर दिया. So you know you thought it would be super effective because it worked in the past. You did it this time, it did not work out as well. Make sense? सही है. सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि योर हर सिनेरियो के अंदर थिंक अबाउट इट, you're using some information, right, that you should not have considered. यहाँ पे आपको पुरानी चीज को याद नहीं करना चाहता, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज को लेकर नहीं बैठना चाहता, यहाँ पे आपने बिलीफ को लेकर नहीं लेके बैठना चाहता, यहाँ पे आपने अपने लाइक इन्वेस्टर रिसोर्सेज को देखना नहीं चाहते. यहाँ पे हर चीज आपने एडिशनल दी थी जिसकी वजह से मसला आता है. नाउ वी कम ऑन सेंस ऑफ ओमिशन, जहाँ पे आपने चीजों को नहीं दिए जिसकी वजह से मसला आता है. सो यहाँ पे आप कोई ना कुछ ओवरलुक कर रहे हो, मिस आउट कर रहे होगे, ठीक है ना. इसके अंदर कितने और तीन है. यहाँ पे दो स्लाइड क्यों है? सो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ठीक है ना. Fundamental attribution error is like this. You make a decision, right? And you make a decision based on incomplete picture. For example, you have a friend, ठीक है ना, who's good at to you in school. You say this is a good person because of how she is in your school. What you did was you don't know how that person is outside of school, so you don't have complete information. But what you did is you kind of to make up for that lack of information, तुमने उसका स्कूल वाला बिहेवियर उस जगह पे जनरलाइज कर दिया कि यहाँ पे भी अच्छी तो वहाँ पे भी अच्छी होगी. What you actually should have done is also considered वो स्कूल के सबसे बाहर actually कैसी. So what you did was actually made a decision, ठीक है ना, based on incomplete information. Just based on one instance आपने दूसरी चीजों को भी जनरलाइज कर दिया. एक
All right, so basically making a decision based on misstart information, and to cover that misstart information आप एक चीज को लेके दूसरी चीजों के ऊपर उसका judgment डाल देते हो. That's fundamental attribution bias. सही. It can also work in this manner कि for example एक बंदा है, ठीक है, उसके साथ तुम्हारी बुरी interaction हुई है in one specific place, right? You don't know how that person was outside of that situation. तो तुमने क्या कर दिया, ये बुरा इंसान है, so you generalized his negativity on all aspects of his life. You did not know what his other behavior is outside of the situation, but you kind of made the decision based on missing information. ठीक है? So that's fundamental attribution bias. You can't overgeneralize it. Now let's look at base rate bias. All right. So what happens is base rate bias can there is actually a phenomenon, ठीक है ना, which you make a decision without looking what was it before. ठीक है? You kind of look at the present picture, right? You don't look at basically what was that situation before, or what is that situation going to lead you towards. You look at the present. You ignore the past and the future of it. For example, it commonly comes when you invest money. अभी सही चल रहा है. You don't look at previous performance कि यार previously ये 30 साल तक की कंपनी पैसे कंटिन्यूसली लूज करती रही है. You don't look at future terms के यार 2 साल बाद इसके बराबर में इससे अच्छी कंपनी खुलने वाली है. You look at what's present और उसके हिसाब से you make the information. So you kind of missing out on the future and the past picture. So that's base rate bias. ठीक है. So since the omission के अंदर you don't take into consider information that you should have considered. ये समझ में आ गया? All right. अब कौन सा है? All right, confirmation bias is very simple. ठीक है ना? Confirmation bias क्या होता है? You look at things that you want to look at. You ignore the things that you don't want to look at, right? Let me make it clear. You know what you want, right? You and for example, you want to buy a car so bad of this model, right? So when a person comes to you and introduces the car to you, ठीक है ना, उसके pros and cons बताएगा, good and bad. What you want to do is you'll जानबूझ के ignore the bad, and you only focus on the good, ठीक है ना, क्योंकि you want to make sure, you want to confirm कि your decision is right. तो तुम क्या करोगे, सारी अच्छी चीजें highlight करके negative चीजें side पे रख दोगे. So that's confirmation bias. You're gonna only consider information that proves you right, and you will ignore all the information that proves you are wrong. That's confirmation bias. All right, sense of imprecision के ऊपर आते हैं. Sense of imprecision, ठीक है ना, is थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, different from the other two. Other two were straightforward. Sense of imprecision. Sense of imprecision के अंदर क्या होता है? You look for shortcuts. जुगाड़ मार दो, ठीक है ना, एंड जुगाड़ मारने की वजह से मसले होते हैं. सो जुगाड़ किस तरह? थिंकिंग प्रोसेस का जुगाड़ मारना, ठीक है ना. Alright, so let's look at it one by one. ठीक है. For example, representativeness heuristic. Heuristic का मतलब mental shortcut होता है, ठीक है. तो representativeness mental shortcuts. Basically, when you make a decision, right, and you're lazy about making a decision, so what you will do, representative heuristic के अंदर, ठीक है ना, you're going to look at indications. Going to look at evidences that क्या कहते हैं, help you make a decision without actually putting your mind to it, ठीक है ना. So basically you're looking at the external factors to make the decision for you, ठीक है ना, without actually using your own brain. It's like this. Let's suppose you're in a meeting, right, and people ask you कि यार हमें कहाँ जाना चाहिए. So instead of using your own mind,
what you look at is, yeah, you look everyone's faces, right? या यू लुक एट एवरीवन्स पर्सनालिटी, ठीक है ना? एंड यू फील कि यार ये लोग जो है ना, ये वहाँ उनके लिए ये जगह सही नहीं होगी, यू नो व्हाट, हम वहाँ चलते हैं विदाउट एक्चुअली टेकिंग टू कंसिडरेशन, ठीक है ना, द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ वन एरिया. You just want mental shortcuts, ठीक है ना? So you will not use your brain, you will just use indication from outside to make the decisions for you, ठीक है ना? यार ये बाजी है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी वहाँ पे अग्री है, इट्स सच, यू नो व्हाट, इजी ऑप्शन है, इसके बाजी के साथ अग्री कर लेते हैं, उनके साथ चले जाते हैं. That's representative heuristics, right? External source, external sources से information लेके आप अपना decision making process करते हो. You don't actually use your brain. ठीक है ना? So that's representative heuristics. And chances are कि जिस चीज का पर आप decision making कर रहे होगे, ठीक है ना, they might not be even valid indicators, या they might not be even indicators at all. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल बहुत दफा ही होता है कि इफ यू डू समथिंग एंड पर्सन से तुमने ये क्यों किया, यू आर गोना से कि आपने ही तो कहा था, and the person say yeah but I didn't mean it, right? What you did was you mistook what they said as something that was a signal, but it wasn't a signal. So that's a representative heuristic that you did. Or conjunctive bias. Conjunctive bias, ठीक है ना, is used when you want something, कोई mathematical involved होता है ना, mathematics वहाँ इस्तेमाल होता है ये, ठीक है ना? So what you do is sometimes, ठीक है ना, you expect something to occur more than the other thing, ठीक है ना? Probabilities होती हैं. All right, so what you do is you expect one thing to occur more, ठीक है ना? And you don't expect two things to occur together. The idea is कि एक miracle हो जाए, ठीक है ना, कंपेयर टू दो मेरिकल्स एक साथ हो जाएं. सो यूर गोना से कि यार एक मेरिकल होना ही बड़ी बात है, तो दो मेरिकल एक साथ होना, वो भी दोनों मेरिकल होना, दैट्स लेस लाइकली. सो यूर गोना पुट योर मनी ऑन द वन मेरिकल हैपनिंग अलोन, राइट? मेक्स सेंस. दैट्स हाउ वी थिंक, ठीक है ना? But what people don't consider is that sometimes, ठीक है ना, two miracles happening alone is more likely if that one miracle influences the other. Yeah, if that one situation influences the other, ठीक है ना? Let's suppose that you don't expect this guy and that guy to come in your house the same day because they hate each other. You know, okay, if he comes, he won't come. If he comes, he won't come. You know that. So you will say, you know what, the chances are that he will come alone. The chances of both of them coming to your house on the same day is not likely. Makes sense. But you fail to consider that, you know what, because this person hates the other guy. Question is about predicting. Yeah, predicting. So people actually get the probability wrong, taken out, and that's conjunctive bias. Available heuristics. Available heuristics. All right. So इसके अंदर again heuristics के अंदर मतलब है mental shortcuts. People are lazy. They don't want to think about this, right? So इसके अंदर basically people don't ask for more information. They should have asked for more information, right? They don't ask. क्यों? क्योंकि मेहनत लगेगी. So इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं. दोबारा कंफर्म नहीं करना, राइट? दोबारा चीज़ें कैलकुलेट नहीं करना, राइट? दोबारा क्या कहते हैं, लोगों से रिपीट नहीं करवाना, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है ना? दैट यू शुड हैव checked and rechecked again but you don't do it, and you just make information that already that's readily available to you, ठीक है ना? That's available heuristics. मसला क्या हो सकता है? That information could be outdated, that information might be incomplete, ठीक है ना? That information, ठीक है ना, क्या कहते हैं, might not be enough, कुछ भी हो सकता है. It can come under commission या omission, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकते हैं. लेकिन मसला ये है, the information is not enough but you still made your decisions on it. Yeah, information is more than enough and you don't need extra information but you make your decision more on it, जो भी है, whatever it is, you're lazy about it, you don't do anything, and that's available heuristics. अवेलेबल ह्यूरिस्टिक्स और रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स में क्या होता है? अवेलेबल ह्यूरिस्टिक्स के अंदर उसी वक्त इंफॉर्मेशन जो है आप एक्सटर्नल सोर्सेज से नहीं लेते.
आंख बंद कर लेता हूँ. You don't want more information. Representative heuristics के अंदर ठीक है ना, you want someone else to make the decision for you, so you look for external factors. ठीक है. So that's how that's the wrong procedure that people use to make decisions. All right. So basically, ग्रुप प्रोसेस के अंदर ठीक है ना, बहुत तरह तरीके से ये आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किस तरह group members ठीक है ना can focus on this aspect. Group members can have beliefs. Group members ठीक है ना can क्या कहते हैं can have extra evidences. So basically this also works when you're alone, and it also works when you are in group together. But क्योंकि ये टॉपिक ग्रुप डेवलपमेंट के बारे में, we're going to discuss how they occur in groups. सीआई के हिसाब से क्या करना है ठीक है ना, सीआई के हिसाब से तुम्हें जो है ना, जो कॉग्निटिव लिमिटेशन है, तुम्हें शायद इसके डिस्क्रिप्शन का नहीं जाना. सही है. ऑल यू हैव टू नो कि सेंस ऑफ कमीशन ओवरऑल किसको कहते हैं, ओमिशन किसको कहते हैं, और सेंस ऑफ इम्प्रेसिजन ओवरऑल किसको कहते हैं. दैट्स ऑल यू हैव टू नो. ठीक है. अगेन मैंने इसके एग्जांपल्स इससे दे दिए सो यू गेट टू गेट एन आइडिया कि तीनों में फर्क एग्जैक्टली क्या है. चांसेस आर कि सीआई अगर पूछता है कि सेंस ऑफ कमीशन के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दो, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दे देना सच एज दिस वन. ठीक है ना. एंड टाइप्स ऑफ कमीशन के नाम दे देना. दैट्स इट. आई डोंट थिंक यू रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन. ठीक है ना. नाइदर द सीआई. आई डोंट थिंक कि तुम्हारे क्या कहते हैं सीआई के बुक के अंदर भी इतना डिटेल दिया होगा हर चीज के बारे में. ठीक है. So that's what you're supposed to remember. So there's a question taken at one cognitive limitation. Question I might ask. Yeah. Description types are not included. Not in my view. Not in my view. क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा. तुम बता दो सेंस ऑफ कमीशन ओवरऑल किसको कहते हैं, एग्जाम्पल. सेंस ऑफ ओमिशन किसको कहते हैं, एग्जाम्पल. सेंस ऑफ इम्प्रेशन किसको कहते हैं, एग्जाम्पल्स. दैट्स इट. डिजाइन देखो यहाँ पे पूछा सेंस वन कॉग्निटिव इज क्या कहते हैं, limitation sense of commission, right? So designers started to investigate whether a group manager makes sense of commission when making group decision about buying computer. अब यहाँ पे इन्होंने overall sense of commission दे दिया. They didn't specify which sense of commission, right? So that's the extent of what how in depth they want to go with it. So you want to find out whether the manager uses sense of commission when he wants to buy computers. You can use any sense of commission that you want, right? So it's very, very open-ended. So we can use this one. यार पहले भी हमने वहां से कंप्यूटर खरीदा था, अब भी वहां से जाके खरीदते हैं. हाइंडसाइट बायस. यार वैसे ही यू नो व्हाट, हमारा वैसे ही उसी कंपनी को पैसे दे चुके हैं, राइट? या हमने ही वैसे ही इतना ज्यादा टाइम यहीं पे गुजार लिया इसी मार्केट के अंदर, तो यहीं से खरीद के चले जाते हैं rather than go to a new market and research again. Sunk cost bias. क्या कहते हैं और क्या होगा, एक्स्ट्रा एविडेंटली बायस्ड. यार इस कंप्यूटर के साथ ना क्या कहते हैं गेमिंग कंसोल अच्छा लग सकता है, ठीक है ना, इवन दो गेमिंग कंसोल कोई काम नहीं ऑफिस के अंदर, बट यू नो व्हाट, दिस कंप्यूटर के अंदर जो है ना गेमिंग कंसोल, ये ग्राफिक्स गेम का अच्छा है, दैट्स व्हाई वी शुड बाय इट, इंक्लूडिंग एविडेंस दैट यू डोंट नीड. बिलीफ परसिवरेंस. और बिलीफ परसिवरेंस क्या आएगा, यू नो व्हाट, आई बिलीव दैट जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं ना, ठीक है ना, रादर देन द लैपटॉप इज मोर बेटर. क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है ना, वो पुराने ज़माने से वो चलते हुए आए हैं, एंड दिस इज द ब्रांड आई यूज, राइट? एंड दैट्स माई बिलीव दैट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट देन अ लैपटॉप, ठीक है ना. दैट्स बिलीफ परसिवरेंस, ठीक है ना. और क्योंकि यू नो दैट जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते हैं, ठीक है ना, they are equally as powerful to a laptop, especially now. So you can choose whatever you want. So let's go with this one. So होगा क्या, ठीक है ना, group of managers, right? So IV is क्या कहते हैं, IV क्या होगा, IV क्या होगा, DV तो DV is the sense of commission occurring or not, that's the DV. IV is gonna be
let's do one thing. IB is gonna be an individualistic setting and a group setting. ठीक है. एक सिचुएशन के अंदर मैनेजर को अकेला डिसीजन बना रहा होगा, दूसरा सिचुएशन के अंदर मैनेजर होगा ग्रुप के साथ डिसीजन बना रहा होगा. So yeah, so IB is individual setting, and the second level of IB is the group setting. DB is to observe, yeah, to measure whether sins of commission occur or not. Our setting would be taking place in a actual computer market fields experiment. ठीक है ना? The sample for the experiment is a lab manager belonging to the same company, right? 11 managers हैं. Uh, like five, like some male, some female, मसला नहीं है, ठीक है ना? You have gotten them through voluntary sampling, ठीक है ना? Yeah, opportunity sampling, I guess go with opportunity sampling. You went to a computer company, ठीक है ना? Ask them कि भाई, you went to a company, ask them कि कोई ऐसा managers हैं जो computers खरीदने जा रहे हैं. They said yes. You ask permission from them. You give them consent, right to withdraw, take privacy and confidentiality. ठीक है. There is क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप डिजाइन, जहाँ पे दो ग्रुप बनेंगे. एक ग्रुप होगा जहाँ पे मैनेजर अकेला होगा, दूसरा ग्रुप होगा जहाँ पे अलग मैनेजर्स ग्रुप सेटिंग के अंदर होंगे. एक ग्रुप में 10 मैनेजर्स, एक ग्रुप में एक अकेला मैनेजर. सो बेसिकली होगा क्या कि they're gonna purchase a computer, right? So after purchasing computer, you're gonna make them fill out a questionnaire form. So your methodology is gonna be a self-report questionnaire जहाँ पे open and close-ended questions होंगे. The questions that you can use to ask is should be related to sins of commission. ठीक है ना? Should be related to this. So you can ask did you buy the computer? ठीक है ना? That you क्या कहते हैं that you previously have an experience using, yes or no. ये question हाइट का bias आ गया. Did you buy a computer, ठीक है ना, from this market because you felt that you have already invested enough time and energy investigating this market, yes or no. Sunk cost bias का आ जाएगा, right? Did you buy the computers considering additional factors that may not be useful in an office environment? Yes and no. Yes, experimentary bias आ जाएगा. State other reasons of why you bought the computer. That's going to be open-ended question. ठीक है ना? Questions that relate to this. Yes and close-ended open question का मतलब qualitative quantitative rate आएगा. ठीक है ना? You're going to give the same questionnaires to both the groups. They're going to be in the same computer market, right? And they're going to have the same time to buy a computer. So that's going to be controls. The data analysis mean लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि quantitative data mean से analyze होता है. और क्या होगा? Yeah, I guess that's it. Is that clear? All right. So now we're done with group decision making process. Group thing खत्म है, since of cognitive limitations खत्म है. Now we start this last portion of groups. Conflicts. We're gonna talk about the conflicts that happens in the group. लड़ाइयाँ जो होती हैं, right? So there are four different types of conflict that can happen in a company or in real life. A person can fight with themselves, like debate themselves. So that's intrapersonal. When a person fight with themselves, yeah, within होता है, within conflict को intra कहते हैं. Within who? The person to intrapersonal. ठीक है ना? If it's between people, that's interpersonal. ठीक है ना? अगर ग्रुप के अंदर होगा इंट्रा, अगेन इंट्रा, within who? Within the group, so that intra group. If it's between group, तो inter group, right? So ये type of conflict आते हैं. All right, so so basically यहाँ पे क्या है कि this is a type of conflict that happen. Now we want to find out कि why can conflict happen. So रिगियो ने बताया था कि भाई जहाँ पे ऑर्गेनाइज के अंदर ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, पर्टिकुलरली वी आर गोना लुक एट दिस कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे हम, सही ना? अभी ग्रुप पर है, सो वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दिस, वी आर गोना नॉट
not going to talk about this. We're primarily going to focus upon intergroup conflict कि ग्रुप के बीच में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं. So Rigel कहता है कि there are two sources of conflict: organizational conflict and interpersonal conflict. ठीक है ना. इदारे के अंदर दो वजूहात से conflict होती हैं. Organizational conflict has to do with professional reasons. You fight with another person because something related to your job, salary, ideas, resources, your status, all job related. If you fight with someone other than job related things, वो फिर इंटरपर्सनल में आ जाएगा. ऐसे पर्सनैलिटी पसंद नहीं है मुझे इस बंदे की, फटा हो रहा है. सो रिको कहता है कंपनी में दो वजह से लड़ाई होती है, as organization of interpersonal, right? So number one, what you have to identify is that रिगियो के रिसर्च में पकड़ नहीं है, ठीक है ना, कि रिगियो ने टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइन किया. टाइप नंबर वन ऑर्गेनाइजेशनल एंड टाइप नंबर टू इंटरपर्सनल. एंड तुम्हें इसके एग्जांपल भी याद करना. That's gonna be your first section of conflict, ठीक है ना. All right. So so there are different researches, ठीक है ना. मैंने यहाँ पे इसका लिंक डाल दिया और मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दिया कि this is a research which shows that there are other sources of conflict as well, ठीक है ना. All right. So for example, कहाँ पे था? For example, this guy says, ठीक है ना, कि conflict happen because of three reasons, ठीक है ना. Attitude, there for example ideas and emotions के different के बीच में, ठीक है ना. Aggressive action की वजह से, and because of values and interest, ठीक है ना. So these are also reasons for conflict, ठीक है ना. So basically if you go through this research, ये screenshot में different different researchers के नाम मिल जाएंगे and different different conflict के नाम आ जाएंगे. For example, यहाँ पे तुम लिख सकते हो going to Makesh and Gillen लोग staff members fight because of limited resources, ठीक है ना. तो basically this highlights the point of resources. All right. So after identifying the types of conflict that we have, उसी के अंदर, it's not the next well, uh, the topic is the same topic. Now we're going to look at positive and negative effects of conflict by Pruitt and Rubin. So इन्होंने कहा था कि भाई conflicts are necessary as well as negative. Conflicts are bad because obviously company के अंदर मसले फटते पैदा होंगे, right? So people will actually focus on the conflict actually than getting the job done. So basically एक दूसरे को तंग करने में मसरूफ हो जाएंगे, right? Rather than doing their job, which also you waste time and money. अगर कंपनी के ना लड़ाई फटते होंगे तो इट कैन डिस्टर्ब द एम्प्लॉय मेंटली एंड फिजिकली, जिसके वजह से लोग छोड़ के जा सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं, या they be less satisfied. And also because of conflict, bullying and harassment के chances company के अंदर high हो सकते हैं. But apart from that, there are positive aspects of conflict as well. अगर conflict होते हैं, ठीक है ना, तो फिर changes आना शुरू हो जाएंगे. अगर लोग फड्डा नहीं करेंगे, लोगों को भड़ास नहीं निकालेंगे, तो कंपनी का changes नहीं आएंगे. Also, they take example from Tuckman के Tuckman ने कहा था कि conflict is essential if you want to form group, ठीक है ना, storming वाला phase. कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट ग्रुप थिंक डजंट हैपन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का ये मतलब होता है कि ग्रुप की हार्मनी खराब होने वाली है. एंड इफ यू रिमेंबर, ग्रुप थिंक इज बैड. ऑल्सो इफ अ कॉन्फ्लिक्ट इज हेल्दी, तो हेल्दी कंपटीशन पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से ग्रुप की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. आई हैव अटैच अनदर रिसर्च, ठीक है ना, जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सब लिखे हुए हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, Gen 1997, conflict can cause increased anxiety. Kavanaugh 1991 and Gen 1997, conflict can cause these things such as lack of team effort, job dissatisfaction. So you can find abundant researches that prove that conflict is either healthy or conflict is either negative. ठीक है. सो ये जो सारे का सारा जो आंसर है, ये वाला और ये वाला, this will help you in formulating your question answer for this, and this is gonna be your homework. ठीक है ना. There are no positive effects of group conflict. So ये तुम्हारा डिबेट क्वेश्चन है, तुम्हारा जो पूरा कंटेंट है यहाँ से मिल जाएगा. Alright, so after that's done, ठीक है ना, now we come on to the क्या कहते हैं, the last portion of this section, ठीक है ना. How to overcome conflict? Is there a way in which you can finish conflict in a company?
So थॉमस कहते हैं कि there are different types of conflict. थॉमस कहता है कि 3C and 2A's, he said 3C and 2A's, right? थॉमस कहता है कि the conflict can have different outcomes. If there's a competition, ठीक है ना, one will lose, one will win. ठीक है. If there's a compromise, ठीक है ना, no one will win. ठीक है ना. If there's collaboration, ठीक है ना, both will win and no one will lose. ठीक है ना. ठीक है. क्योंकि दोनों parties same side पे आते हैं, so everyone will win now. There's could be an avoidance as well कि एक लड़ना चाहेगा, दूसरा जो है बिल्कुल completely back off होगा, जिसकी वजह से एक जीतेगा और एक हारेगा. Accommodation. Accommodation क्या होता है कि accommodation के अंदर basically you don't collaborate with the person and you don't back off. You just sacrifice yourself, ठीक है ना, so that the other person can win, ठीक है ना, because you want to minimize damage. So basically अपने आप को sacrifice करना, ठीक है ना. So तुम like जानबूझ के you choose the losing side, so that's accommodation. So again, there's one aspect जहाँ पे win win हो रहा है, बाकी सब के अंदर कोई ना कोई हार रहा है, कोई ना कोई जीत रहा है, ठीक है ना. So that's what Thomas says कि there are different uh, क्या कहते हैं types of conflict that's going to happen. Alright. So basically थॉमस ने क्या किया कि जो 5 different styles हैं इसको दो एक्सेस प्लॉट किया. Assertiveness कि how dominant are you, and cooperateness how willing you are to like join hands with the person. So if you don't wanna dominate and if you don't wanna cooperate yourself, तो क्या होगा, you're gonna completely remove yourself from situation. That's where avoiding comes in. ठीक है ना. But if you don't want to be dominant, ठीक है ना, and if you wanna क्या कहते हैं just be cooperative, ठीक है ना, so that's accommodating. जहाँ पे you don't want to dominate, you just care about maintaining relationships, that's accommodating. Compromise करने क्या होगा, you are dominant but not super dominant कि आप दूसरे को हराओ, you are cooperative, ठीक है ना, but इतना भी cooperative नहीं कि आप उसको अपने ऊपर पूरा चढ़ने दो, so that's compromise. कहीं ना कहीं बीच में आ रहा. If you are dominant but you don't want to collaborate with anybody, that's ये वाला competition. And if you are dominant but you're willing to cooperate as well, so that's collaborating. जहाँ पे ये वाला, जहाँ पे you wanna win but you wanna maintain relationships as well. See ना, so he has plotted these on different axes of assertiveness and cooperation. ठीक है ना, वही चीज़ अभी तक change नहीं हुआ. So based on this, right, थॉमस ने क्वेश्चनर बनाया था, ठीक है ना, क्वेश्चनर बना बेस्ड ऑन दिस मॉडल. 1976 के अंदर इसने मॉडल दिया और 2010 के अंदर ये क्वेश्चनर बना इसके अंदर. द क्वेश्चनर नेम इज द ठीक है कॉन्फ्लिक्ट मॉडल इंस्ट्रूमेंट और ठीक है CMI. ठीक है. So this questionnaire, what it does is basically kind of measures the conflict type that is taking place, right? It will find out कि किस टाइप का conflict हो रहा है तुम्हारे कंपनी के अंदर or whatever. Now the thing is, this questionnaire was given to many people of many part of the world. ठीक है. US के लोगों को भी दिया गया था, right? And it was given also people of 16 different countries as well. ठीक है. And what happened was, if you give it in the US and if you give it in other countries, the results are kind of similar. तो इसका मतलब है कि TKI जो भी क्वेश्चनर है, that is culture not culturally biased, it's culturally applicable to everyone. तो इसका ये मतलब होता है Thomas's model of overcoming conflict is also culturally valid. It is applicable in every single culture because according to questionnaire ये हर culture के अंदर visible आता है क्योंकि इस क्वेश्चनर का स्कोर हर कल्चर के अंदर सिमिलर आया था when he did the 2010 research. So that's going to be your argument. So is this model applicable? Yes, पहली बात ये इसका क्वेश्चनर बना हुआ है. So obviously it is applicable. It is how what other ways is it applicable? Well, you can teach people there are different outcomes to conflict, and you can teach people the concept of assertiveness and cooperativeness, and you can teach people कि आपको अपने like how to alter your cooperativeness assertiveness.
You can tell people you don't always have to compete. You can, there are other options as well. So you can train people to choose what they want to do with the conflict. All right, so दूसरा क्या होगा? Is it reductionist? Well, नहीं, क्योंकि Thomas, if we talk as conflict, ठीक है ना, it's not reductionist क्योंकि there are many aspects he's considering, especially assertiveness, cooperativeness. So that's not reductionist. Is it deterministic? Free will यहाँ पे apply नहीं होगा. Is it culture bias? We have discussed नहीं है culture bias, ठीक है ना. Application हो गया, whole individualist हो गया. Is it individual situational? Well, uh, it can come down to the individual क्योंकि the level of assertiveness and cooperative that they have will determine the outcome of the conflict. So assertiveness and cooperativeness are part of personality factors. तो ये personality elements है. So it comes down to the amount of cooperativeness and assertiveness the individual shows. So hence, as the individual, um, reductionist, individualist, nature, nurture, and free will deterministic. I guess that's it. Apart from that, हमने discuss करी application का. So there are other ways. So basically, अभी तक हम discuss करें, ठीक है ना? Regio identified the types of conflict, ठीक है ना? Ruben and Pruitt identified positive, negative types of conflict, and the third section, ठीक है ना? The third topic is Thomas, how to solve the conflict. So sticking with Thomas, ठीक है ना? We're gonna throw about expand Thomas's theory. We are still within Thomas, ठीक है ना? Thomas से बाहर नहीं गया. There is a concept called superordinate goals. Basically, can we have a goal that requires team to collaborate with each other जिसकी वजह से फड्डा बन जाए? For example, दो दुश्मन साथ मिल गए to defeat someone powerful, and when they defeat someone powerful, do they become friends? Yes or no? That was superordinate goals means. So this is something within Thomas, ठीक है ना? So Thomas का हिस्सा है, but जो research पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो किसी और की पढ़ेंगे. But this will still come under how to overcome conflict. So the research that we're going to study is by Sharif, 1961. ठीक है ना? It's a very famous experiment. तुम्हारे पुराने सिलेबस का हिस्सा था. Now it's not anymore. So होता क्या है? This is a famous experiment called the Robert's Cave experiment. Robert Cave experiment, ठीक है ना, takes place between boys, ठीक है ना, जो 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 क्या scouts होते हैं, right? So these boys, ठीक है ना, who are part of the scout, होता क्या है कि एक summer camp की तरफ जाते हैं, ठीक है ना. So 22 boys, ठीक है ना, spend 2 weeks at a location जहाँ पे summer camp गुजारने जाते हैं. 11 बच्चे दूसरे ग्रुप में भेजे जाते हैं, 11 बच्चे दूसरे ग्रुप में भेजे जाते हैं. So they're assigned to two separate groups. होता क्या है कि they don't know that the other group exists. For the longest time, they thought that they were the only one who were in this summer camp. They did not know कि भाई दूसरा group भी वहाँ मौजूद है. And that's very important. तो होता क्या है? This experiment is divided into stages. In the first stage क्या होता है? First stage के अंदर obviously 11 बच्चे जो होते हैं ना एक ग्रुप के, 11 बच्चे दूसरे ग्रुप के होते हैं, राइट? उनको क्या करवाते हैं? उनको ऐसी एक्टिविटीज देते हैं जहाँ पे ग्रुप वाले आपस में काम करें. मतलब लाइक 11 बच्चे अपने 11 लोग के साथ मिलजुल के काम करें. दे डोंट कंसिडर अदर ग्रुप. दूसरे ग्रुप से भी कोई वास्ता नहीं है. 11 लोग टू इंक्रीज देयर यूनिटी, टू इंक्रीज देयर कोऑपरेशन, टू गेट टू नो ईच अदर, ऐसा एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल खाना बनाना, ट्रेजर हंट, लाइक एनीथिंग दैट इंक्रीजेस यूनिटी within that group. That's the first stage. So what happened was at the first stage, होता क्या है कि this actually works because the groups now have a name and they make a flag. One group calls themselves the Eagles and the other group calls themselves the Rattlers. ठीक है ना? तो ग्रुप के नाम बन जाते हैं. When the groups are named, फिर उसको बताते हैं भाई listen up, you know what, there's another group as well in this camp. And the second stage is this one, जहाँ पे conflict पैदा करवाते हैं between group number 1 and group number 2 or Eagles and Rattlers. तो कॉन्फ्लिक्ट किस तरह पैदा करवाते हैं? अब दूसरे तरीके के गेम होते हैं जहाँ पे आपको दूसरे ग्रुप के साथ compete करना होता है, such as like sports होते हैं, whatever. And ग्रुप को बोला जाता है कि जो भी जीतेगा at the end of summer camp उस ग्रुप को एक ट्रॉफी मिलेगी.
सो अब यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप के पीछे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करवाते हैं. दे मेक द ईगल्स हेट द रैटर्स एंड दे मेक द रैटर्स हेट द ईगल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग कंपटीशन बिटवीन देम. So what happened was कि this actually works. जो ईगल्स के बच्चे होते हैं ना, वो लैटर्स के कैंप में घुस के उनका झंडा जला देते हैं, उनका टेंट वगैरह खराब करना शुरू करते हैं, और बेसिकली फिजिकली लड़ना भी शुरू करते हैं आपस में, एक दूसरे की चीज़ें चोरी करते हैं whatever. ठीक है ना. सो अगर तुम्हें अभी तक कोई इंडिकेशन चाहिए कि तुम दिस एक्सपेरिमेंट वर्कड इन मेकिंग द कॉन्फ्लिक्ट, देयर योर प्रूफ. अब देयर इज स्टेप नंबर 4 एज वेल. ठीक है ना. इन स्टेज 4 क्या होता है, सॉरी स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 के अंदर जब दोनों ग्रुप एक दूसरे लड़ रहे होते हैं, स्टेज 3 के अंदर व्हाट दे डू द एक्सपेरिमेंटर्स एकदम पानी का सप्लाई ना कैंप के अंदर काट देते हैं दोनों ग्रुप के लिए. अब पानी का शॉर्टेज आ गया. सो व्हेन द बोथ द ग्रुप्स रियलाइज कि भाई पानी कहाँ चला गया, द पीपल टेल देम कि भाई जो पानी है ना वो असल में वो एक बड़े पत्थर की वजह से रुक गया है. ठीक है. सॉरी एक ट्रक की वजह से रुक गया है, और आपको ट्रक हटाना पड़ेगा, otherwise you will not get water. So what happened was obviously there 11 boys and 11 बच्चों के लिए ट्रक बहुत बड़ा होता है. So the only way to remove the truck was if the boys work together. So what they do is the boys actually end up work together, taking eagles and ladders joined forces to remove the truck together. And after they remove the truck, taken up, they celebrate and they stop being enemies. They make friends. They exchange gifts with each other, and they become no longer enemies. So this goes to show that the superordinate goals do work in removing conflict with the other group. Now, if you talk about the experiment taken out by Sharif, it was a field experiment taken out, so it was ecologically valid क्योंकि ये real life environment हुआ था. Ethical मसले obviously आ सकते हैं. Was it valid? I told you कि ecologically valid हो सकता है, right? Uh, are there any demand characteristics? I doubt so because the kids barely knew this was an experiment. They actually fought. They actually burned things. ठीक है. Um, is it generalizable? Girls नहीं थी. Different age groups के लोग नहीं थे. We know that they were boys and they were young, so may not be generalizable as that much. Is it replicable? Well, it is. It is replicable. ठीक है ना. We can design the same type of games. We can design the same type of rewards to other people if you want to redesign the experiment again. Is it applicable? It is. Now we know के what to do जब हमें conflict खत्म करने पड़े. All we need to do is design a superordinate goal. So that's it. So you can use this Sharif का experiment to support the concept of superordinate goal. लेकिन I'm still telling you ये overcoming conflict के अंदर आता है. ठीक है ना. तो overcoming conflict के अंदर थॉमस भी है और रॉबर्ट्स की एक्सपेरिमेंट भी है सुपर ऑर्डिनेट गोल्स के बारे में. बाकी दो चीजें इस सेक्शन के अंदर इज द इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड द लास्ट वन इज द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज हाईलाइटेड बाय रेडियो. ठीक है. सो दैट्स इट. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? मैंने रॉबर्ट स्केप के बाद कुछ और स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं. ठीक है ना. विच टेल यू अदर वेज टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है ना. सच एज कम्युनिकेशन, respect, and empowerment. So there are other ways to solve conflict as well. You can look into it. सिर्फ ये तरीके नहीं है to solve the conflict. So other than that, that's it. I have given the homework. ठीक है ना. ये वाला question है. कहाँ गया? Yeah, this one. It's a debate question. ठीक है ना. That's gonna be your homework. Is there anything that you want to clarify? So did you ask the admin about the second topic? Yeah. उन्होंने कल डाउनलोड किया था. ठीक है ना. I think they're gonna upload it today. All right. Then I'm gonna sign off. Office.